Attention, attention. Your attention and readiness that today can help you win exciting prizes. And I'm very happy to introduce this particular segment of the day that today, and who doesn't love prizes, right? So learning with fun is the best combination, is what I believe. So what I'm going to do here today is ask you questions pertaining to startup industry and to the discussions that are going to happen here. Be very attentive about it, be very alertful about it, and out of those questions, anyone who answers that particular question correctly has to come up to the stage. I'll ask the question. If you know the answer, you have to come up to the stage, answer, and then if you answer it correctly, you will win exciting prizes. So isn't this interesting? Yes? Isn't this interesting? A louder yes, please. Lovely, lovely. So why not I ask the very first question to you right now before introducing our second panel and welcoming them. So listen very carefully, and the first person to come up on the stage will only get the chance to answer. So listen very carefully, okay? So the question is very simple. Which is the first unicorn startup of India who bagged the title of unicorn? Which is the startup of India who bagged the title of unicorn, and in which year? Whosoever wants to answer, please come up to the stage, and then the mic will be given to you and you have to answer. Yeah. Come up to the stage, don't raise hands. You just stand up and come up to the stage. Yes. So your good name and the answer. Myself, CA Pankaj Dara. It was Book My Trip in 2010. Sorry, which one? 2010 bookmytrip.com. Bookmytrip.com 2010. Do you have a different answer? Yes, please, sir. I'm Vikas Polar. It's Indian Premier League, IPL. And the year is, I think, 2008. Okay, IPL in 2008? No? No, we do not have a correct answer. Both of these answers are not correct. Yes, please, sir. I want young students back there also to be very attentive. Hi, I'm Jaydeep Prajapati. It is InMobi in 2015, I guess. Okay. So do you have a different answer? No, InMobi is correct. And the year? 2014, I think. 2014. Yeah. Okay. Yes, absolutely right. InMobi is the first unicorn startup, but the year that was mentioned is wrong. That is, the year it bagged the startup unicorn title was 2011. I would request the first person, the one, yes, you, please. Yes, please. So a huge round of applause. It takes immense courage and confidence to come up on the stage to answer, even if the answer is wrong or right. So please, a huge round of applause for him. And this prize is for you. I would request Charlene Podar to please come and hand over the prize to the winner. A round of applause, please. Lovely. Talking about unicorns, moving ahead, as you all know, becoming a unicorn is a significant milestone for any startup. And it takes a lot of hard work, dedication, and support to get there. The latest statistics shows that nearly 33% of Indian startups have bagged the unicorn title in the last financial year. The impressive percentage will empower you to dream even bigger and take your business to unimaginable success. However, it takes a lot of effort to enlist your startup in the unicorn startup category. So let us dive deep into it and call our esteemed panelists for the space of empowering startups on their unicorn journey. And for the same, I would like to call Mr. Amar Ummat, Building and Scaling Record Club. Please, as I introduce the speakers, please give them a round of applause. Mr. Amar Ummat, Building and Scaling Record Club. Mr. Sumit Srivastava, founder and CEO of the startup Chaupal. Mr. Vikrant Potnis, founder at Fundable and IAVC. Mr. Jatin Kataria, founder and CEO of Investa. Mr. Jivraj Singh Sachar,
Venture Operations at AngelList. And to moderate this session, I would like to call Mr. Shaleen Poddar. Please give them a round of applause. So how many founders do we have in the room? Can you please raise your hands? Okay. How many investors do we have? Any investors? And how many of you are startup enthusiasts who are working on your startup or have already built a startup? Yeah, I mean ideation stage. Okay. So first of all, I would request all the panelists to just give a brief introduction about yourself as well as your journey. So let's start with Mr. Vikrant. Hi, my name is Vikrant. I run a company called Fund Enable. Fund Enable is predominantly an investment banking platform for growth stage startups to raise a round of capital. We raise around $3 million to $15 million. Last year, we did around 7 transactions. And I personally sit on seed funding committees of 17 incubators and work very closely with the incubation ecosystem as well. Thank you so much for inviting me. Hi, I'm Amar. I'm the founding partner at Record Club. And previous to Record, I was in the equity space, spent about 7.5 years working across cross-border M&A. Started Record along with 2 other folks where we primarily advise companies on debt financing across various debt products depending on their company life cycle. Yeah, it's a pleasure being here. Thanks. Okay, so hello everyone. My name is Sumit Srivastava and I run an organization called Startup Chaupal. Startup Chaupal is, सब लोग जानते हैं चौपाल का मतलब होता है कि एक जगह पे जहाँ सारी सर्विसेज हों और गांव में आप जानते हैं कि वो चीज़ें होती है तो इन्वेस्टर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स सब एक प्लेटफॉर्म पे हों तो वी हैंड होल्ड स्टार्टअप्स फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन टू फंडिंग सो जिसके पास भी कोई आइडिया होता है वो अगर वो स्टार्टअप फाउंडर में पोटेंशियल है और आइडिया स्केलेबल है वी सपोर्ट देम विद ऑल द रिसोर्सेज take them to the next level, streamline their journey and then get them funded, initial seed funding. So this is what we do. Thank you. Yeah. Hi everyone, this is Jatin Kataria. My journey with startup ecosystem started way back in 2009 on the European land. Since then, it's been 13, 14 years, been active into this ecosystem for a long time, met people from startup ecosystem from 100 plus countries in person. Been in all the chairs of startup ecosystem, say it investment, say it accelerator, say it startups. Been running ventures for a long time, few ventures as well. Now majority handed over to partners and CEOs. Right now I'm running a company called Investa, which is mainly into corporate innovation. So we help a lot of corporates or even large enterprises having turnover between 50 crore to 4,000 crore, help them align their journey with the startup ecosystem at large, being any, and also into fund management as well as venture studio management as well. Handing over to you. Hello everyone, delighted to be here. Thanks for having me as a part of the panel. I'm Jivraj. I actually work at AngelList India. How many folks in the audience know what Zerodha does? Zerodha? Show of hands. Awesome. How many of you know what AngelList does? Okay, fair. So Zerodha is a good equivalent for private markets AngelList. So AngelList helps you invest in startups. I've been a part of the team for the last 2.5 years. And I myself invest in companies through an angel syndicate called Indian Silicon Valley Capital. We've deployed $3 million in capital across 15 companies in the last 2 years now. Thank you so much. So I am sure that you would all want to learn from them. So Vikrant, can you please shed some light on the process and criteria you use while selecting startups which you help raise funds? Sure. So what is happening is the criteria has changed significantly if you see over the past few months specifically, right? Right now what is happening is even an angel investor is asking questions like monetization, unit economics, etc., right? The basic criteria remains the same, innovation, large market opportunity, positive unit economics, revenue generation, and that is something which we are also focused on. What we do is we keep speaking to a lot of investors and try and understand what is the trend right now and take a call basis that. Some of the deals that we have recently done, we've done a deal in the electric two-wheeler space called eMotorrad. We've raised money for a very large blue and grey collar jobs platform called Work India. We did 6 rounds of capital with them.
One of the companies here, a SaaS platform called Task Tracker. So these are some of the sectors that we've been working with of late. Right. That's great. So Amar, can you please tell us how do you foster a culture of innovation and adaptability within your own startup? Yeah, Shireen, thanks. I think I'm going to start with piggybacking on something what Vikrant just said. Building a company, or for that matter, scaling a company is a mindset. I mean, it all starts with being obsessed about one particular point, and from that particular point, figuring out iterations that you can keep working on and solving. Most likely, when you are building a company out, it's always to very customer-centric. Depending on what use case have you really been able to identify, what use case you believe you can solve in this particular life cycle of the company. It's very, very important, Shalin, just to attach the point that you made here. Innovation is automatically fostered when an ecosystem is created, and that ecosystem has to be with one like-minded people that are also identifying the same use case as you or the same customer problem that exists in the market. Automatically, when you will note that there is an inefficiency that is to be solved in the market, you will start innovating, or you will start at least ideating towards innovation, and eventually you will strike gold one of the days. That was very helpful. So Sumit, can you please tell us what challenges did you face while building a private incubator and what helped you overcome them? सबसे पहले शालीन चैलेंज है ही नहीं. सो आई ऑलवेज से इंक्यूबेटर्स जो चलाने वाले लोग हैं ना, वो प्राइवेट लोग ही इंक्यूबेटर्स चला सकते हैं, बिकॉज इफ़ दे आर रनिंग द शो और वो खुद एफर्ट्स ले रहे हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लोगों से मिलजुल रहे हैं, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट फंडेड और एनीथिंग, तो वो एंटरप्रेन्योर्स के साथ एम्पैथाइज कर पाते हैं, राइट. सो तो चैलेंज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, राइट. सो एक चीज़ समझना होगा कि सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊँ, अभी आप पूछ रहे थे कि कितने लोग यहाँ एंटरप्रेन्योर बैठे हैं और स्टार्टअप फाउंडर्स बैठे हैं, तो मैं जल्दी से बता दूँ आपको कि आज के ज़माने में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सब या तो एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा. और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टअप करें, माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं. अब एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे यहाँ पे. तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात है, और चाहे आप जॉब करें, चाहे आप किसी कंपनी में अपनी खुद का स्टार्टअप करें, लेकिन आपका एटीट्यूड एंटरप्रेन्योर वाला ही होना चाहिए. ये मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा ये डिस्कशन और ये सब कुछ. तो चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है, तो ओवरकम करने की जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात ये है कि हम एक टीम की तरह काम करते हैं फाउंडर्स के साथ, जैसा आपने पूछा था अभी. तो जो भी पोटेंशियल फाउंडर्स हमको लगते हैं कि भाई ये बड़ा गेम कर सकते हैं, वी जस्ट आइडेंटिफाई दोज स्टार्टअप्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, दोज फाउंडर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, नॉट स्टार्टअप्स. और फिर उनके साथ मिलकर जब हम काम करते हैं तो वो गेम के बड़ा बनाते हैं, क्योंकि उनमें पोटेंशियल होता है. आज आपके इवेंट में हमारे 25 फाउंडर्स जो सक्सेसफुली फंड रेज कर चुके हैं, सेकंड राउंड में ग्रो कर रहे हैं, जो पिच करना उन्होंने हमारे साथ सीखा था, एंड दे आर हियर एग्जिबिट कर रहे होंगे. मैं चाहूँगा सारे पैनलिस्ट सब मिले, उनसे एफर्ट लेके आए, वो अलग अलग शहरों से. सो चैलेंज नहीं है, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है. और जब भी मुझे कहीं ऑफर किया जाता है कि अप्लाई करो ये फंड लेने के लिए, वो फंड लेने के लिए जो सपोर्ट करे, मुझे पता है कि अगर फंड ले लिया हमने जिस दिन, उस दिन हम कंफर्ट हो जाएंगे, और जिस दिन हम कंफर्टेबल हो गए, फिर वो पेन नहीं लेंगे जो हम फाउंडर्स के साथ अभी लेते हैं, राइट. सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. और कोई भी इंक्यूबेटर चलेगा जब उसका फाउंडर एंटरप्रेन्योर होगा. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टअप चौपाल में चलाता हूँ, पर मैं मेंटर नहीं हूँ. स्टार्टअप चौपाल इज अ स्टार्टअप टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, एंड आई एम अ फाउंडर. तो मेरा एटीट्यूड वही है जो मैं दूसरों से चाहता हूँ फाउंडर से, जो वो करे, राइट. सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ चैलेंज एट ऑल, राइट. Got it. So I would also like to highlight that 7 of portfolio companies of Startup Chopal are exhibiting downstairs. So whenever you can, please visit the exhibition and interact with those startups. So Mr. Jatin, I would like to ask you that a lot of founders struggle with pivoting. So nowadays we hear that pivoting in a startup is very important. So can you please shed some light, like how can they pivot and build a proper business model? सबसे पहले तो वही चीज़ है कि वो एस्केपिज्म है, स्विचिंग है, या एक्चुअल पिवोटिंग है. तो जनरली व्हेन लाइक वी हैव सीन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स डे इन डे आउट, और 10 इयर्स में बहुत सारे स्टार्टअप की जर्नी को देखिए. बहुत सारे लोग कस्टमर के पास जाते हैं और 1 2 5 ना सुनते हैं और फिर चेंज कर देते हैं, विच शुड नॉट बी द केस. आइडियली हम ये बोलते हैं कि जितने भी बिजनेस मॉडल प्रोबेबल अवेलेबल है मार्केट में, ट्राई करो कि अपने कंसेप्ट को लेके वो कोई भी बिजनेस मॉडल अलाइन हो सकता है कि नहीं. आई विल गिव यू एग्जांपल. इफ समबडी सेलिंग अंडरगारमेंट, राइट, सो वन स्टार्टअप स्टार्टिंग अंडरगारमेंट ऑन अ सास बेसिस, तो आप अंडरगारमेंट का सब्सक्रिप्शन लो, आपको हर 3 महीने में साइज कलर प्रेफरेंस के हिसाब से दे कीप ऑन सेंडिंग यू.
right? Now somebody thinking of this business model into this segment is a key thing. So जितने भी business model है, like हम लोगों ने एक list बनाया कि 65 business model we generally works in startups. So try to align each business model into your venture and see that how many revenue stream can be generated. So it's about building the complexity eventually. Last thing कि एक होता है business model complexity zero जो आपको भी समझ में आता है, सामने वाले को भी समझ में आता है कि ये इतने का है और everybody understand कि ये margin क्या होगा, pricing क्या है. वो business model complexity zero है. Business model complexity one है जो actually इतना visualize नहीं दिखता, लोगों को नहीं पता होता है. That's where figuring out that process of finding a very complex way of building business model which competition doesn't know. Right, so for example, McDonald's है तो they are one of the world's largest toy selling company. Right, तो हमें दिखता है but फिर भी दिखाई नहीं देता है. So this is called complexity number 1. So that is their revenue stream. वैसा complexity number 2 है जो दिखाई भी नहीं देता पर है. तो you don't know but उनके अंदर होगा कि कोई स्मार्टफोन 1000 रुपये में सिखाता है तो people think कि 1000 रुपये is a revenue model for that smartphone teaching. But imagine कि वो गोएबीबो को जाके बोलता है कि I'll give you pre-trained customer कि जो गोएबीबो यूज़ करेगा, I'll help them download everything, but गोएबीबो वो यूज़ करेगा. तो हम लोग pre-train नए कस्टमर देंगे जो सीखने आ रहे हैं. तो 1000 रुपये वो गोएबीबो से लेगा, 1000 उबर से लेगा, 1000 बुक माई शो से लेगा. तो देन उसका रेवेन्यू स्ट्रीम 7000 का है, बट वो चार्ज 1000 कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी 2, वेयर योर कॉम्पिटिशन कैन नॉट फाइट विथ यू. They don't know that that is a revenue stream, that is the business model. So it's all about building it, and then you can pivot as and when needed, not necessarily you need to pivot everything aligned to it. Yeah, I'll just quickly add something to that, Shalin. Sure, That's sure. okay. I think आपने बहुत अच्छा point यहाँ पे mention करा, and आपने अभी mindset की बात करी, and we discussed about fundraising. I think it's very important while we pivot, right? And this is a journey that I myself saw while we were building Record out. You have to keep, while you're thinking about a pivot, also keep thinking about maturing and growing depending on the life cycle that you are in. When we are at 0 to 1, आपका extreme focus is in finding the right problem to solve, working with the right ecosystem to solve that particular problem, really ideating and working with the customer, or rather listening to all possible customers to eventually figure out what kind of a feature do you really want to build. This is one aspect of your journey. What if we move from 0 to 1 to 1 to 10? You have to again start spending your finite resources, your finite time in not just speaking to your loudest customer, but actually working with your most passionate customers. It's extremely important, right? Too much time wasted is actually very bad for companies, and that is where they believe they should pivot. Ideally, if you are pivoting, please also spend time with the customers, the passionate ones, and not the loudest ones. It's extremely important. Yeah, that was really helpful. So Jivraj, I would like to ask you, as part of AngelList, you must be surely analyzing a lot of startups. So what do you think are the emerging trends in the startup ecosystem currently? I think that's interesting because all of us are, witnessing this wave of AI, and I think that's shifting the way we look at technology and potentially going to be one of the biggest things. I had the pleasure of, in fact, attending the session by Sam Altman in Delhi, which was, I think, last week. And he and amongst others are very confident that this will be potentially the largest technological breakthrough in this decade and maybe more. But beyond that, I think what we're looking at the grassroots level is India's at a point where the primary, infrastructure is now set. The technological advancement from a, UPI standpoint, which makes payments very effective. The infrastructures of delivery, which is now sorting out any e-commerce deliveries, right? So I think the level 1 base is very clear, where startups have come in, spent a decade, 15 years to sort out the first level of needs utility. And now consumers are at a point where consumers are demanding a second level of comfort, maybe luxury, maybe other things that will make lives easier in a greater manner. And that's interesting because now startups are coming up and being like, okay, we'll tackle harder problems. We'll crack Bharat distribution, right? So we often in the venture world talk about how there is Bharat 1, India 1, India 2, India 3. There are a lot of solutions coming up for the new age Indians who are now coming to the internet or becoming first time internet users. So I think that's an emerging trend.
AI is, of course, an emerging trend in software, which will potentially change how we look at so much of what we do, right? Productivity tools, video creation, image creation, natural language to code. What was being done by a developer today, or what was being done by a developer 10 years back, will potentially change, and use cases will be hard to imagine, let alone what we can talk about right now. Beyond that, I think what the other interesting part in fintech and other trends in the ecosystem are on the B2B side. I think on the consumer level, while so much has happened, B2B innovation runs the economy, right? Because that is the hardcore of what drives MSMEs in the country, drives so much of the supply chain, value chain of the economy. So companies like Zetwork, companies like Off Business, companies like Infra.market, right? These are lesser known unicorns in the same space in India, but they are doing some very interesting grassroots innovation, and I think that will also continue. So I think B2B, supply chain, fintech, B2B, AI, and Bharat innovation. I think those are very interesting trends that we see a lot of young founders, experienced founders build towards and tackle very hard problems, incrementally changing lives towards the better. I'm sure the audience now has a pretty good idea of the emerging trends. So Vikrant, as you talked about eMotorArt, so can you tell me two portfolio companies that you are very proud of and one thing that they did very right? Sure. So obviously, eMotorAd was exhibiting here last year. It was a very challenging fundraise for us because investors look for certain things. Example, asset light. Example, a very large domestic market. None of these were true for eMotorAd. They were a capex heavy company, a manufacturing company. The Indian market was not the primary market. It was US and Europe, right? So for good 9 months, we were struggling to raise a round of capital. But we believed that the company is really, really good. And a very different thought process had to be applied. So what we did was we went across the world and started reaching out to a specific category of funds called climate impact funds. And this category, this opportunity hit really well with this particular company, and we were able to raise a round of capital from a fund called Green Frontier Capital. And the founders of IBY are also investors. That's also a very interesting story that we had to fly to Dubai and just raise 1 crore rupees quickly to ensure that we have a runway of at least those 3 months where we were not able to raise a round of capital. So that is one company which is doing really, really well and now looking to raise their next round of funding. Very close to my heart. Another company which is very close to my heart is a company called Work India. This is a Bangalore-based jobs platform. So what Naukri does to white collar, Work India does it for security guards, telecallers, field sales guys. In India, most of Indian jobs are those jobs, right? So this is a platform specifically made for hiring this category of jobs. And what is beautiful about this company is that we raised $6 million in the previous round, and a very large competitor called Apna raised $900 million in one go. And we had $6 million in the bank, right? And after that, the investor ecosystem, if you have a competitor who has raised $900 million, it becomes very difficult to raise the next round. But still the company managed to kind of, keep doing what it was doing in the right way, kept monetizing. And today, if you see, Work India is still the largest player, raised another round of $12 million. So some of these things of, what we say entrepreneurs need to be, they need to really believe in what they are doing, right? And that really drives success a lot of times. And through these companies, I've seen it very, very closely. That's great, that's great. So Amar, finance is an industry which is very close to my heart, plus Gujarat is a state which has a lot of fintech startups as well. So can you highlight what do you see the future of finance industry in the next 5 years? I mean, it can swing anyway, honestly, with the way the macros are behaving and generally sort of things are, the trends are correcting. The industry can either have a massive upswing or a massive downswing. But what doesn't really change is your behavior, whether there is an upswing or a downswing in the next 5 years, right?
as you would have noticed, there has been a gradual shift from the unicorn mentality to the cockroach mentality, which is more about resilience, something that Vikrant just touched base on. And that sort of will still continue. At any point of time, if you're starting a company or building a company, you have to start building a capital stack that works for you rather than you working to build a capital stack. So at any point of time, while the trends are going to sort of, you're going to ride the waves and you're going to float in still water, sometimes you're going to even sink, it is extremely, extremely important that your capital stack at that particular point of time is also not as wavy. Because if it is wavy, then you will only be riding the macros and never the fundamentals of your business. However, to answer your question a little more directly, with the amount of influx of capital that we are seeing, at least for the Indian ecosystem, any company that has the fundamentals right, they are at least on a trajectory of profitability. Even if they're not profitable today, they will always have abundant opportunities to keep raising, abundant opportunities to keep growing. And well, yeah, something that Vikrant again mentioned, resilience, right? Because both the companies are very close to your heart, I know that we can do something for them. So we're going to connect right after this. Amar, just a follow-up question. So do you think the establishment of Gift City in Gandhinagar would help the finance industry and ecosystem in general? Oh yeah, most definitely. I think that question got answered right after the entire SVB fiasco that we saw when Silicon Valley Bank gave, I think, most of us here heartburn during that weekend. We realized that having easy facilitation of capital between geographies is crucial, and that is something that Gift City is facilitating. So most definitely, you can see that the ecosystem is moving towards a slightly more mature way of working. So it's only going to go upwards from here. Right. Sumit, as someone who has worked with a lot of startups, what are your 3 golden rules that you would suggest to all the startup founders we have here that they should follow throughout their life? Okay, so first thing, obviously ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन, क्लीशे आंसर दूंगा मैं इसका वैसे कि भाई कीप गोइंग, दिस इज ओनली वे. सो वो आंसर देते पहले एक चीज़ मैं बोलूँ कि जो ये पैनल है इसका है ना एम्पावरिंग योर ऑन योर यूनिकॉर्न जर्नी. तो जिस दिन आपने कोई प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया, कोई आइडिया सोच के, उस दिन से जर्नी अपने आप चालू हो गई, राइट? यूनिकॉर्न की जर्नी. यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है सब लोग जानते होंगे, $1 बिलियन से जो रेवेन्यू वैल्यूएशन हो, नॉट रेवेन्यू, वैल्यूएशन. और है ना आपके सूरत में शालिन ये वैल्यूएशन पे जब मैं मिलता हूँ यहाँ के चेन्नई वाले जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये वैल्यूएशन रेवेन्यू के लिए बड़े सवाल होते हैं उनके, राइट? सो एंड दिस इज अ फेयर क्वेश्चन. और आने वाले टाइम में ट्रस्ट मी कुछ बहुत दूर नहीं है वो टाइम जब ये होगा कि 1 बिलियन रेवेन्यू होगा तब ये यूनिकॉर्न होगा, राइट? ये होने वाला है आने वाले टाइम में, कोई सरप्राइज नहीं है. तो मेरा ये बोलना है कि यूनिकॉर्न बनाने के लिए स्टार्टअप नहीं करना. और ये मैंने यूनिकॉर्न बनाया नहीं है, बट यूनिकॉर्न फाउंडर्स कार देखो, डील शेयर, डिलीवरी, सबके फाउंडर्स से जब हमारी बातचीत होती है तो यही कहते हैं किसी ने भी ये करके स्टार्ट नहीं किया था कि यूनिकॉर्न बनाना है, राइट? तो यूनिकॉर्न एक चीज़ है जो हो जाती है और जर्नी चालू हो जाती है. तो यूनिकॉर्न सोच के कोई स्टार्टअप नहीं करना है, दिस इज द फर्स्ट रूल. अगर कोई स्टार्टअप ये बोल देता है ना मुझे कि मैं यूनिकॉर्न बनाना चाहता हूँ, तो वो मेरे उससे लिस्ट से गायब. कि वो कर सकता है, यूनिकॉर्न बना सकता है, बट मैं कनेक्ट नहीं करूँगा उससे. दूसरी चीज़ है कि इन्वेस्टर्स के पैसे आपके पास आते हैं तो फंडिंग के लिए डेफिनेटली बहुत लोग पहले दिन से सोचते हैं कि फंडिंग हो जाए, फंडिंग हो जाए. ये दूसरा रूल है कि अगर आप किसी से, एक बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी सही है कि आप एडवाइस लेने जाओ तो फंडिंग मिल सकती है, लेकिन फंडिंग लेने को तो पक्का एडवाइस ही मिलनी है आपको, राइट? सो एक चीज़ है कि फंडिंग करके शुरुआत नहीं होती, पहले आपको काम करना होता है. और तीसरी चीज़ ये जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो भी स्टार्टअप्स के साथ हम काम करते हैं 3 महीने उनके साथ काम इसीलिए करते हैं हम क्लोजली कि हमको पता चल जाए कि कौन रुकेगा. क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है. ये दिखने में बाहर से जो लोग स्टार्टअप नहीं कर रहे होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स को देखते हैं तो उनको लगता है कि क्या लाइफ है, कभी भी कहीं भी चले जाते हैं. बहुत ही लोनलीनेस है, बहुत ही अंधेरा है. ये रोते भी हैं सब साइड में बैठ के, बट अब स्टेज पे बैठते हैं जब हम तो चौड़े में बात करते हैं. तो पॉइंट इज कि नहीं, आप तालियां बजा लीजिए प्लीज़, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट. और ये ना आप लोग तालियां बजाते रहो हैं, ताली बजाने से 58 तरह की बीमारी दूर होती है. और ये मत पूछना कौन सी, मुझे नहीं पता, वो इंटरनेट पे देखा और मैंने चिपका दिया यहाँ पे. तो ये पॉइंट है. तो भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टार्टअप हमेशा क्योस में चलते हैं, वो कोई प्रोटोकॉल में नहीं चलता. एंड गारंटी है कि जो स्टार्टअप के जो प्रोडक्ट लेके आप लॉन्च करोगे ना, वो प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपका स्टार्टअप बनेगा, जो बिजनेस करेगा. वो पिवट होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट बताता है आपको. सो मार्केट जब आपके प्रोडक्ट में फीडबैक देता है, तब आप अगर इमोशनल हो जाते हो या कनेक्टेड हो, मेरा बेबी है स्टार्टअप, ये सब इमोशनल बातें नहीं होती. बहुत ही प्रैक्टिकल गेम है भाई. आप कोई, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप और बिजनेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है.
तो बहुत लोग सोचते हैं स्टार्टअप दूसरी चीज़ है, बिजनेस दूसरी चीज़ है, दोनों में पैसे बनाने होते हैं आपको, और वो वैल्यूएशन के गेम में अगर जाने के बबल की कोशिश कोई करेगा तो भी प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्योंकि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट जब बैठे हैं और आगे बात भी करेंगे, माइंडसेट अब सब लोग जानते हैं जो यहाँ पैनल में बैठे हैं कि अब माइंडसेट वो नहीं रहा कि प्रोजेक्शन दिखा दो और फोमो क्रिएट कर लो, सब ज्ञानी हो गए हैं अब। ये 16-17 में क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा था ना, तो सबको लग रहा था कि फोमो क्रिएट हो जाए, अब वो है नहीं समाना। तो पॉइंट ये है कि अगर पूरी तरह से मिला के देखो ना तो कोई सटीक थंब रूल किसी चीज़ का नहीं है। तो मुझसे पूछते जब स्टार्टअप्स कि आप क्या करते हो स्टार्टअप के साथ, तो मैं बोलता हूँ कोई सिलेबस फॉलो नहीं होता है। किसी की मार्केटिंग स्किल अच्छी है, किसी का टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, किसी में प्रॉब्लम है, तो जो रिक्वायर्ड है वो किया जा सकता है। वी डू एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द स्टार्टअप रन, ग्रो एंड स्केल। तो इसके लिए बस स्टार्टअप का ये देखना होता है कि उसको सब्जेक्ट मैटर की थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग हो और वो रुके मार्केट में, और इसको पता हो कि नेचुरल है अप्स एंड डाउन्स, और लाइफ टाइम चलेगा। सो दिस इज व्हाट आई सी, एंड ऐसे ही चल रहा है, और यू नो वेरी वेल क्या क्या चल रहा है, तो ये So I'm sure ये 3 thumb rules सब याद रखेंगे. So Jatin, we have a lot of students and young crowd with us. So I would like to know from you, as someone who has attended a lot of tech startups weekends, visited a lot of colleges. So what do you think what role do these events play in nurturing the entrepreneurs and startups? No, Jatin. You both can give it. जनरल क्वेश्चन, ओके। तो सो लास्ट जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ बहुत सारे स्टार्टअप से मिलना होता है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन अभी? कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे नर्चर कर रहे हैं? हाँ, ये नेटवर्क, ये जो इवेंट्स होते हैं, ये कह रहा हूँ। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक चीज़ बहुत क्लियर है कि स्टार्टअप कोई अकेले इंसान का गेम नहीं होता, राइट? और आपको सारी चीज़ों की नॉलेज भी नहीं होती। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और अभी ग्रोथ का इवेंट भी हो रहा था और 300 प्लस इन्वेस्टर आए, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि 300 इन्वेस्टर से यार ये सब लोग जो बैठे हैं, अगर एक एक करके आप मिलने जाओगे ना, आपको 3 साल लगेंगे। और अगर इस ऐसे इवेंट में आते हो तो आपको चूज करने का भी ऑप्शन होता है किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। एक तो आपके सामने बूफे लगा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि आप 3 दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ और लोगों से, और अब जब आप यहाँ आते हो तो जरूरी नहीं कि हर बात को फॉलो करो। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपके एडवाइजर और मेंटर्स होंगे, जो भी फाउंडर्स होंगे, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बोल दूँ, जो भी आपके एडवाइजर और मेंटर्स होंगे वो आपको एडवाइस देंगे, उनकी एडवाइस प्लस योर विजडम विल गिव यू रिजल्ट। अगर जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर रहे हो ना, तो आप नहीं काम कर रहे हो, फिर आप क्लर्क हो। क्लरिकल अप्रोच है, आई एम नॉट डिमीनिंग क्लर्क्स, जस्ट सेइंग क्लरिकल अप्रोच है कि जैसा बोला जा रहा है वैसा कर रहे हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक बोला जाता है कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क, तो बहुत सही है, बट मेजोरिटी जो लोग हैं ना उनको पता नहीं है कि नेटवर्क में कैसे बदलना है। तो देन योर नेटवर्किंग बिकम्स योर नॉट वर्किंग, राइट? तो बहुत सारे लोग इवेंट में जाते हैं, वहाँ माहौल बनता है, सब कुछ होता है, उनको लगता है हमने नेटवर्किंग कर ली। जब आप आते हो यहाँ पे, सेलेक्ट करो लोगों को, और सब लोगों से आप नहीं मिल सकते। 5 लोगों से इस इवेंट के बाद अगर आप कनेक्ट हो पाए, उनके साथ चाय पी रहे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं, तो यहाँ आना आपका प्रॉपर ROI है उसकी। अदरवाइज आप यहाँ पे टाइम वेस्ट किया आपने, एंड इट वॉज नॉट नेटवर्किंग, इट वॉज नॉट वर्किंग, राइट? सो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको पता नहीं कि आज जो मेरे स्टार्टअप चौपाल में बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं अक्रॉस द ग्लोब जो मुझे इवेंट्स में मिले हैं, और मैं आइडेंटिफाई करता था। अभी एक इवेंट हुआ, कोई आए थे, मैं शायद जस्ट क्विकली कर लूँ, वो स्टेज पे बैठे थे, मुझे चाहिए थे वो मेरे कैप टेबल में। मैं ऑडियंस से मैंने क्वेश्चन पूछा और उसको रेफर करके, मैं ये बता दो ये बहुत काम करता है, लिंक्डइन को बहुत अच्छे से यूज़ किया, उसको रेफर करके मैंने उनको लिंक्डइन पे भेजा कि मैं ही वो जो क्वेश्चन पूछा तो बहुत सही आपने आंसर दिया। हालांकि आंसर कोई अच्छा नहीं दिया था उन्होंने, बट मैंने बोला कि हम भी कोई आंसर अच्छा नहीं देते, बट मैंने बोला बहुत अच्छा दिया था एंड आई वांट टू मीट यू। और उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, और मैं जाके मिला उनसे, और मिलने के बाद सारी बात हुई कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि फिर वो बैठ के 1 to 1 मेरे से बात कर रहे थे। और जब मैंने सारी चीज़ बताई, नाउ ही इज स्टेक होल्डर, ग्रेट सपोर्ट सिस्टम, इन्वेस्टेड मनी इन आवर कंपनी। तो ये पावर है ऐसे इवेंट्स में जाने का। तो अब मैं उनको ढूंढने जाता है, ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेता हूँ तो क्या होता। सो आप आते हैं यहाँ पे क्राउड में बैठ के, तो सवाल जब आप पूछ के, पकड़ के, बातचीत करके सबको कनेक्ट कर लो, सब आपको जानने चाहिए। फिर आप कल परसों फिर मिलना जब हम घर पहुँच जाएंगे अपने अपने। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स एंड रियली हेल्प्स। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है फाउंडर्स के लिए। या Jatin, we would like to know your views also on the same thing, like all the ecosystem enablers and events like Techstars Startup Weekend. How are they nurturing the young entrepreneurs? Yeah, I mean, of course, no matter the age, no matter the business, going to events always helps. And जितना pre-preparation करके जाओ उतना great है. Just give an example. My first conscious event was in 2011, जो मैंने proper pre-plan करके की. तो 100 South Asian के youth leaders थे, 99 थे, I was one among them. So I studied all 99 before going to that event. So on day 0, मेरे को हर 99 के बारे में पता था. Same way if I am coming to this event, तो हमारी analyst की टीम ये करती है कि जितने भी लोग speaker है उसका list तो आ चुका था.
तो हर स्पीकर को एनालाइज करना, उसका बैकग्राउंड डालना, उसकी कंपनी के बारे में समझना, उसकी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में समझना, उनके पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स के बारे में समझना, तो वो हमारे पास एक एक्सेल शीट में रहता है. तो अगर मुझे आज किसी से भी मिल रहा हूँ, मैं चेहरे से पकड़ लिया कि ये पर्सन है, I just need to open it, I read it, and they can go and talk. So that's called pre-preparation. So it's about what's your objective of going to an event. One, आप specifically tech startup weekend के बारे में पूछ रहे थे. It's a must attend event for anyone, no matter the age. So converting idea into a product in 54 hours is a beautiful experience. ना कोई सोता है, I don't know. Is there anybody who attended startup weekend earlier? There are a few people. So those who've been there, they can understand that how it feels like. Yeah, so in fact, Ahmedabad में recently CA लोगों के लिए startup weekend था, तो all CA, majority CAs were participants, few among I can see here as well. So converting their idea into product in 54 hours. So product validation, problem validation, solution validation, pricing validation, everything happens in 54 hours. Otherwise, generally it takes months or years to figure that part out and goes into delay mode. So it always helps to getting into those kind of places where a lot of fast forward validation can happen, fast forward mentor marathon can happen. सो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टअप वीकेंड जैसी इवेंट तो सब लोगों को ज़िंदगी में एक बार तो अटेंड करनी चाहिए, और इवेंचुअली मेंटर या जूरी या कोई भी ऑर्गेनाइजिंग रोल में भी अटेंड करके जाना चाहिए. बट आई हैव अटेंडेड so many events in my early age as well. If I talk about my student life, I was structurally attending events and meeting people and aligning to it. So just to share 30 seconds. So my journey started because of participating in an event. So एक competition था 2009 में, which was open innovation competition. I took part, I became an ambassador for them. Eventually I ended up becoming their India president, ended up becoming a global VP, ended up becoming the organizing committee. And at the end of 4th year, we organized open innovation competition for AT Karni, PRME, United Nations. I'm talking about 2011, 12, 13. Ended up doing summit in 11 countries, mega summit in 12 countries. So that journey has happened in my early 20s. और ये सब चीज़ें अर्ली आ गई, इसलिए was able to be active into startup ecosystem and build portfolio that way for me and for my clients now as well. So I don't know, maybe somebody attending events here can take things lot on a larger side of it from time. Who knows? Yeah. Yeah, I think very sort of nicely put by both of you. What is crucial is more than going to the event, what you actually do at the event, right? आपका धर्म है as a founder to be your biggest brand advocate and brand evangelist at any point of time. An event is like a watering hole. It's going to attract anyone and everyone. You just don't know what is going to spark a conversation which is going to eventually lead to a fruitful outcome. Being present there, being vigilant about what is happening in and around you, and being able to, well, at the right time, be at the right place, be opportunistic, is everything that a founder or anybody sort of in the founding team of a company needs to be aware of while they're at the event. So to stand by your words, you are also wearing your Record Club t-shirt to promote your brand, right? Yeah, never miss an opportunity. So Jivraj, I have been following your podcast recently, and I would like to know what inspired you to start your own podcast, and also can you tell our audience that how important are podcasts to develop new ideology? Sure. So for context, I actually run a podcast called Indian Silicon Valley. The name comes from the fact that I truly believe that India is the forefront of innovation for the next decade or two. And so we combine the words India and Silicon Valley. The thought behind starting the podcast was as simple as I actually come from Calcutta, and while I was growing up in Calcutta, studied in Calcutta, I wanted to start a company. But as a commerce grad, I didn't know how, right? To start a tech company requires some coding skills, some background, some understanding of the Indian tech ecosystem. None of that was known to me at the time. And so I realized that the best way to solve for this was to either work at a company or to start and learn from some of the best people. And then I started researching about some of these resources, right? And while media does a great job, and with all due respect to Indian media, they do a great job as telling us what Ola does, what Unacademy does, what Flipkart does. They don't tell us how they got here, right? The 10, 15 years that got spent to build these companies that are household brands now, we don't really get to know how they built it. And as somebody who was curious, graduating from college, I was like, why not understand these core principles of how these companies are built? What would be the worst outcome? I would learn how to build a company,
at the best, people who had similar questions would also get these answers. And so in the process, I started, and this was an extension of my curiosity. Thankfully, it's come to the extent where I've now had the pleasure of hosting 50 plus unicorn founders on my show, a total of 140 founders. And what's that? I mean, I am the biggest benefactor of my podcast. I often say this because I've had the pleasure of witnessing 90-minute conversations with 150 people who have raised venture capital money, build companies from scratch, generated value for millions of customers, generated employment, economic output. And I have, got to absorb from them. I've got to question them of how they've gone about the fundamentals, and I've learned a ton. On the viability of some of this, I think I owe so much gratitude and all of my career to second-hand learning. The way most of us learn, right? We either make our own mistakes, or we talk to people who've been there, done that, learn from them, or we learn from third-party resources, right? For me, the third has always been the most prominent because I've had the pleasure of, bridging this learning gap, learning things that we all, don't know anything about, but mastering it. I've never been a podcaster until 4 years back, but now that I've been running a show for 2 years, I've been continuously looking up resources. I've been learning how to podcast by other resources as well. So I think anything like a podcast or so many of these resources are monumental in the learning curve, and they've played a very crucial role in what I've gotten to do, and I'm sure a lot of you will agree that these resources are very helpful. I'm sure everyone here would follow the podcast, The Silicon Valley, after this conversation. So to conclude the panel, we will just take up 1 or 2 questions from the audience. So anyone having any questions can just raise their hand. Yes, please, sir. Very good discussion on the panel. I'm a CA Pankaj Dara, also doing some startup works in that. I'd like to ask a question to each of all. Startup shop. Yeah. I like the way you presented yourself in Hindi. I admire that. बाकी सबने इंग्लिश में कहा, आपने हिंदी में कहा. वैसे मैं भी खुद काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ, मैं खुद रूरल इंडिया को टैप करने के पीछे लगा हूँ. बहुत सारे अर्बन में जा रहे हैं. मैं जलगांव छोटी सिटी से हूँ. वहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि रूरल इकोसिस्टम डेवलप हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम रूरल के हैं ना, रियली वो कहीं ना कहीं मास इफेक्ट करते हैं, वो मास टचिंग करते हैं कि जिनकी लाइफ को रियल इफेक्ट पड़ता है. तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि रूरल इकोसिस्टम में हमें किस प्रकार के वेंचर करने चाहिए और किस सेक्टर को मेजरली टैप करना चाहिए कि ताकि प्रॉब्लम्स ग्रास रूट से सॉल्व हो. दैट शुड बी टॉप बॉटम अप्रोच और बॉटम डाउन अप्रोच. सर मैं एक चीज़ बताऊं मैं कि सबसे पहले तो मैंने हिंदी में बोला था, इसको अप्रिशिएट कर रहे हो या अप्रिशिएट कर रहा हूँ सर. हाँ, मैं कई सारे मंचों पर हिंदी में ही बात करता हूँ. इवन दो आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद हिंदी का प्रमोट ज़्यादा करता हूँ और मैं हिंदी स्कूल का पर्पसली चेयरमैन हूँ. हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं हिंदी स्कूल को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ जो बंद होने के कगार पर है. सो दैट्स व्हाई आई एम. नहीं, मेरा तो सिंपल सा होता है. देखो मेरा तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को मुझे कवर करना होता है. अब क्या है कि इंग्लिश हो सकता है 5 लोग या नहीं जानते होंगे, हिंदी 100% लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सबको पहुँचे. और दूसरा भी कमाल की बात ये है, इंडिया में हमारी एक फ्रेंड आई है, अभी इन्वेस्टर हैं, अभी आएंगी पैनल में, तो वो कल किसी को बता रही थी कि सुमित से हिंदी में बात करा लो, बहुत अच्छी बात कर रहा है. मैं कह रहा हूँ इंडिया में अप्रिशिएशन मिल रहा है हिंदी बोलने के लिए मुझे. ओके सो तो सबसे पहले सर मैं बताऊँ ना सीरियस नोट कि अब मार्केट बचा और आने वाले टाइम में बचा ही है रूरल इंडिया में. और क्योंकि ना शहरी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग बहुत हो गए हैं और वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होती जाएगी या नई नई प्रॉब्लम्स आती जाएगी, वो तो दुनिया चलती रहेगी. बट रूरल मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया में और ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे. हमारे कई फाउंडर्स हैं जो $1 बिलियन $1 मिलियन ऑफ फंड्स और वैल्यूएशन में पहुंच गए हैं. बेंगलोर में बैठते तो बेंगलोर में, लेकिन पूरा टारगेट करते हैं रूरल इंडिया को, राइट. सो दे आर सर्विंग रूरल इंडिया, राइट. एक पार्ट तो ये है कि मेरा टारगेट मार्केट रूरल इंडिया है और एक है कि मैं वहाँ जाके कुछ करना चाहता हूँ. सो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप वहाँ जाके कुछ करना चाहते हैं या उनके लिए कुछ करना चाहते हैं. बोथ वे. अच्छा देखो, अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप यूएस बैठ के भी अपनी टीम बना के और वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और टीम दौड़ा के वहाँ पे कर सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू गो देयर, जैसे मैं पहले जयपुर से स्टार्ट किया मैंने, फिर मैं गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, अब सिंगापुर, हम सब जगह गए. बाद में रियलाइज हुआ जब यूएस वगैरह के इन्वेस्टर से और बाहर के इन्वेस्टर जो एनआरआईज है उनसे बात हुई तो वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ पर फोकस करना शुरू कर दिया उन्होंने. जितने वेंचर फंड वगैरह सब छोटे छोटे शहरों में जाने लगे. तो हमने मध्य प्रदेश में, मैं गया एमपी के शहर में, एमपी पूरे जो छोटे छोटे शहर है, ट्रस्ट में जबलपुर एक शहर है जो मेरे दिमाग के मैप में भी कहीं नहीं था. और वहाँ जब मैं गया और वहाँ के स्टार्टअप जब आए मेरे से मिलने के लिए, जो एकदम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, ऐसे पढ़े हुए, जो वैसे नहीं, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो मैं 10 बार यही पूछ रहा हूँ तुम लोगों ने यही बनाया है इसको और यहाँ लोकल में बनाया.
तो हमारा इंटरेस्ट आया कि अब हम वहाँ के गवर्नमेंट के साथ, तो अभी एमपी गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग, और हम वहाँ के छोटे शहरों में वी वांट टू हेल्प पीपल, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि, और हम लोग क्या, जैसे मैंने बताया अभी शालीन को, कि हम लोग ना मेंटर वेंटर नहीं है स्टार्टअप चौपाल, वी आर ऑल्सो स्टार्टअप टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। तो हमें जहाँ बिजनेस दिखता है ना, तो हमें समझ में आ गया कि अब पोटेंशियल यहाँ पे है, तो हम वहाँ जाएंगे इस साल से, वहाँ के स्टार्टअप जो हमको पोटेंशियल लगेंगे, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे नेविगेट करना है वही हमको आता है, सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्टी फाउंडर की होनी चाहिए। तो वो जानता है कि अच्छा वहाँ का फाउंडर अगर आपने निकाल दिया तो वो ज़्यादा एम्पैथाइज करेगा अपने आसपास वालों से। अगर अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है ना जो सीए वगैरह की और इसकी सर्विस देते हैं, आप जानते हो, बस चलाओ उसको टेक्नोलॉजी वाले रहे, तो वो क्या होता है, बहुत goof offs होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एम्पैथाइज नहीं कर पाते। अगर आप सीए हो और आप कोई प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें आप कंपनी रजिस्टर करो, ये करो, तो ज़्यादा एम्पैथाइज कर पाओगे, स्मूथ होगा ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो अब यही करना होगा, जो हम तो करना चालू कर चुके हैं और ऐसे ही करेंगे, जो हमारा तरीका है, तो अब आप उसमें से निकाल लेना कि कैसे कर सकते हैं। इसमें बस ये कि वहाँ के लोगों को एम्पावर करके वहाँ का एक नेता चुनो, उसको तैयार कर दो और वो आगे काम चलाएगा। तो एक हमारे वहाँ पे जयपुर में जयपुर रक्स करके, और बहुत लोगों को हेल्प किया है, छोटे मतलब उनके पूरे वर्कर्स गांव के हैं, तो उन्होंने एक ही लाइन बोलते हैं कि अगर रूरल इंडिया को आपको बड़ा करना है ना, तो उनकी लाइफ आसान मत करो, मतलब उनको फिश खिलाओ मत बना के, उनको फिश पकड़ना सिखा दो। सो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग, कि वहाँ जाके ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दें कि वो समझ जाएं कि गेम क्या है, और वहाँ छोटे छोटे स्टार्टअप चौपाल बनाने वाले लोग हो जाएं, और वो ऐसे ही पूरा सर्व हो जाएगा मामला। सो दिस इज हाउ वी आर अप्रोचिंग। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन, मेरा भी 27 को जबलपुर में लेक्चर है। Oh, wonderful. बस आप जाके ऑब्जर्व करें वहाँ पे, you will be very I'm also happy. finding out the same solutions कि छोटे गाँव में पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ नर्चरिंग प्रॉपर करने की जरूरत है। I also don't believe that कि बड़ी सिटी में जाके काफ़ी मैं कॉम्पीट करूँ या उनके डेलीब्रेट करूँ, इंस्टेड ऑफ ग्रूमिंग ऑन द रूरल पार्ट ऑफ द इंडिया, जिनको रियल ज़रूरत है। क्योंकि बड़े बड़े जो फ्लिपकार्ट्स हैं, अमेजोन हैं, इनको बहुत कंपटीशन, छोटे गांव में बहुत बिजनेस प्रॉब्लम आ रहा है। सो आई वांट टू टैकल इट दैट सॉल्यूशंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट दैट कि ये हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप छोटे शहरों की रूरल इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ना बड़े शहरों को छोड़ नहीं सकते, एक्सपर्टीज वहीं से आएगी। तो मेरा कहना है एक्सपर्टीज पैसा वहाँ से लेके आओ, बांट दो इनमें। दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क। We have lot to talk about. We'll later on discuss something. Yeah, thank you very much. And podcast, I like your podcast. I'm also running a startup magazine for beginners. We'll connect sometime. आपके लिए भी एक question था, लेकिन later on. I'll sometime to be part of your podcast. Yeah, so we do have a networking launch on 6th floor. So after the session, if anyone wants to network with any people, you can surely use the networking session. And due to time crunch, we will just conclude the panel discussion. Can we please have a round of applause for all the panelists for their time and their insights?